हेलो एंड वेलकम अगेन। सुबह 5 बजे से स्ट्रीम करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। फाइनली स्टार्ट कर रहा हूँ एंड होपफुली अच्छे से हो जाएगी। लेट मी इनेबल ऑल द चैट्स एंड स्टफ. It's not enabled at the moment. My OBS crashed when I tried to start it, then I tried to resolve all the issues. And I'm not sure if I have resolved all the issues. And by the way, last night, I think I think last night. I used Google Drive after a long time, and what happened was I had deleted some files from the Google Drive, the older files, but it was backup of the OBS system, basically the streaming system. So what happened was I had created a new file that was being used after the stream ends, basically the end screen that you see, but it had the same file name because how OBS worked basically. And now what happened was last night when the Google Drive was syncing automatically, it deleted that file as well because it was deleted in the Google Drive. So yeah, I have lost the file and I have no idea how this stream will end. I think it will directly go to the black screen with the background music playing a little bit. I don't know. And hopefully that's the extent of it. I'm not sure how many files have been deleted, and it's annoying kind of, but it's a backup tool, to be honest, and sometimes it backfires because it also deletes the file in the local PC as well sometimes, which is annoying, but yeah, it is what it is. It has happened with me before, and that's why I disable it completely. Last night I enabled it because I had a lot of files to upload. I bought the 2 terabyte plan there, 2 terabyte plan, Google Drive plan, because I am running out of storage, and right now the SSD or SSD costs are over exaggerated. They are like inflated. They are being sold at inflated price, and I didn't want to buy the storage outside, the hardware storage that is, and that is the reason I decided to store the files to Google Drive and other drives temporarily before the actual hardware buying decision. So yeah, that is the plan, and that's the reason I initiated Google Drive again yesterday, and it kind of deleted a lot of files which was no longer in the Google Drive because I deleted them. It did the same with my local files, which I did not want to do. I don't know how to fix these things, but it is what it is. Like I said, it has happened already. I cannot do anything about it, so I'll just forget about it. And I think if it's just the end screen file, then it's a good thing because I needed to redesign things, and this would give me the push, I guess, because I want to create a new starting BRB and end scene for the stream, and different ones probably depending on what I'm streaming, and that would be a challenge because for the BRB scene, for example, for the BRB scene of the gaming channel, I want to replay some highlights from the game streams that we have done, and for the work stream that would be slightly, I think we'll start with the gaming scene. We can promote like the work people as well, a little bit of gaming with the gaming channel, and maybe later we will create a separate BRB scene for the work channel where we will just create a different kind of highlight where we will show the best of our work, and that will be played when I'll activate the BRB scene. Right now there's nothing, and that's the reason I don't take break and activate the BRB scene. I simply end the stream when I have to go somewhere for a moment or something. So that's not a good sign, but I was too lazy to create something new. So I think this will push me towards creating something new, because I will redesign the end scene. I don't think I have it on my Canva account. I had created it with Canva. I didn't work on it a lot. Obviously, it was a template, and I edited a little bit and then used it. Hopefully, right now I'm wishing. Hopefully, it's not there at the moment, so that I can focus on creating a new one instead of just reusing the older ones.
but I'm just looking at it, trying to find it if it's still there. I would be happy if it was in my old account. I think it was on my old account. I think it's better. My old account is banned, by the way. Some sort of violation occurred. It was not directly me, but something happened in my account because of which the account got banned, that one. This is my another account, and in this account I don't think I have the layout, but it was a template, so if I'll try to find it, like, I'll easily be able to find it. And to be honest, I don't want to. This time we'll use the actual video editor and try to create something actually good. By the way, I haven't like freshened up or anything. I was awake and I wanted to stream like at about 4:50 or something, but because I don't get anything by streaming at that time, and also because it was too cold outside, I decided maybe a little bit later, and this is a little bit later. And we will work on the thumbnail series as I have promised you guys. And the reason that I am continuing with the thumbnail series is because I kind of need to make money. And that's the reason. Okay, I think we haven't started with the general intro that we do, so let's do it for the first time today, and then we'll continue with the step. This would be day 188, right? Need to confirm. I forget about it completely. By the way, if you don't know why day 88, we jumped like 3 days if you see some of the recent streams, and that is because somehow I did not count 3 extra streams that we had already done. And when I counted the day before previous stream, I realized that actually the number was higher, 3 higher. So that's why the jump between, I think it was 183 and then 187 and then it is 188. That's the reason. But I'm not changing the number. I will let it be like that. But actually the number is 188, which is the true number, and we are continuing with that number. So yeah, let's record the intro again. Hello and welcome again. Thanks for joining again, and this is my stream number 188 of my 365 days streaming challenge, and today I'm continuing with the thumbnail making series, and we'll be creating some thumbnails today. And the reason I chose the thumbnail series for the day is because I need to create some thumbnails that I want to pitch the potential client that we had looked for, and also because, hey bro, what's up? Thanks for joining. How are you? The reason I have decided to go with this one is because I had some ideas in my mind that I want to try. These ideas were not there initially, but later when I was trying to, I'm looking for the idea. It is somewhere over here. When I was trying to send the email, if you guys joined the last Your Thumbnail series, then you know what I'm talking about. We wrote an email and I wanted to share that. Thank you for joining. I never comment because I am too busy doing things, but thank you for joining. Okay, it was the car thumbnail basically that we had made, and I have only one made at that point, and that was because I kind of couldn't think of new ideas. But again, if you remember the last stream where I streamed game, but I talked about a lot about my work, I have trained some AI models myself. It took like 2 days for me to train on my system because my PC is not very powerful PC. It took two days for me to train the system,
and the new AI system that I've created, and it will basically suggest me thumbnail ideas, title ideas, and stuff. Uh, I will explain how I did it maybe someday. Right now, I think we should focus on the thumbnail. I'll give you a little bit of basic, like wait a moment. I'll explain in like basic idea for a moment, and then we'll continue. And this is something I want to try. I don't know how it will work, but a new tool that I'm trying to use to explain things. Let's see if this will work. So what I have done is created a database, and the database is something like this: title, okay, then thumbnail, and then it's so small right now for you guys, the font size. Okay, and then I was explaining why it works. I'm just giving you a simple idea of what this was, and then there will be like a lot of titles and thumbnails over here. I don't know how this tool works. I'm doing it for the first time. Okay, 1 is select, 5 is 2. Error. Okay, so there would be a lot of title, thumbnail, and why it works, and I trained the AI to basically learn. First brush. Okay, so basically I have a collection of titles over here, then the corresponding thumbnail for that video, and I have explained the entire psychology and why it works and stuff like that over here, and I trained my AI to learn from it. All these 3 elements that I have, it's a big Excel sheet basically. I can't show because it has a lot of things, but that's the entire thing that I've done over here. And now the AI basically learns from the title, thumbnail, and why it works, and database that I have given it, and gives me some sort of ideas basically that I can use. And the reason I have done it myself instead of just using ChatGPT, Gemini, and stuff like that is basically I wanted some sort of control over what title, thumbnail, and strategy that we will be using, the psychology of it. And that's the reason I chose the thumbnails myself, titles myself, and created a massive list of, I think, 10,000 titles or something like that. I don't know. I've been doing it like for 3, 4, 5 years. So I've been collecting all the title, thumbnail, and why it works. I was creating a list for over 5 years now, and that list is what I have trained the AI on. You can do it easily too, by the way. You don't need to be this aggressive, but I wanted to create something for myself to be like extra advanced a little bit, and that's the reason I created this. So database is not like very complicated, as I showed. There are more columns, obviously. There are more things that I have added here. It's a secret at the moment, but yeah, so that was the plan, and it worked for me, and I now get amazing title and thumbnail suggestions from my AI that I've created, and I used it to get some ideas that we can use in the future. And by the way, you don't need to do that at the moment. If you remember, the gem or the custom GPT thing is slightly newer thing. It wasn't there before, and that was the reason I decided to create all these Excel sheet and then track every title, thumbnail, and tag it with things like description, psychology of how it works and stuff like that, because it was difficult back then to create something directly from the chat GPT or Gemini or something, anything, any tool of that sort. And that is the reason I was building this list, because the option to create just custom GPT or Gemini, custom gem, wasn't available back then, and that was the reason I created them. So since I had them already, I wanted to utilize it, and that's the reason I
used it, but to be honest, you don't need to. You can like create custom gem and custom GPT now easily, and that can be utilized as well for the same thing. So you don't have to be that aggressive like I did. Just letting you guys know, you don't have to be this extra dedicated towards your course. Okay, I launch Affinity and then I'll save the screen. Hopefully everything is working fine. I don't have a preview because I've opened my ideas over here, where I usually see the chat and live preview. Hopefully everything is fine. Okay. This is by the Fiverr gig I was working on. It's a simple thing at the moment, but I wanted to upload something, so I did it. I created this. This is thumbnail gig for Fiverr. And I also didn't know that I can create multiple pages inside the same project. So I created duplicate projects before. But this is something new that I learned. I can simply add new pages and add all the design in the same document. So this is some of these are some of the thumbnails that I have made, and I added it to display. And this is something I created last night, I think, or maybe the day before yesterday, to add to my Fiverr gig and Upwork. I haven't created anything for Upwork. I think that requires like square kind of image, and I think I will create something new for that one as well. For now though, we will focus on something else. Let's close all. I will focus on the car thumbnail because I need to create some more options before I reach out to the owner of that channel and pitch for some extra thumbnail ideas. Sorry about this. I know you can also see that I have cleared a lot of storage. All the storage was full, and that's the reason I bought the 2 terabyte plan from Google Drive and uploaded a lot of files there. Where it is, found it. I was looking for the Affinity project because in the recent file it's not being shown at the moment. Okay, let's open it. So this is our initial thumbnail that we were working on, and the reason I have decided to switch my ideas because I got some new ideas, not necessarily because of the AI that I have created, but also because I just realized that this text elevate, which we copied from the original thumbnail basically, is redundant, right? I didn't realize this when I was making it because I was kind of living in the same space as the creator of the original thumbnail, and I was like, in my mind I was kind of blocked with the thought that maybe we can do something else, maybe we can write something else, and I wrote Elevate because the car owner wanted to mention the car basically over here, Honda Elevate, which we can, I think we have already talked about it a little bit, but even then I didn't realize that maybe we should change the text. So this is one variation. It's fine, but the reason I don't want this text to be the final text is because we already know it's Honda Elevate, and then it will also be mentioned in the title, and even the car is showing the Honda logo and the Elevate number plate over here. So I don't need to, and of course the Elevate will not be readable in a smaller screen like phone, for example this, but we don't need to. People who will see this video will be searching for this car basically, or at least at least they will be suggested this particular video, and the moment they will look at this car they will realize what car this is, and they will look to the thumbnail to confirm their curiosity, their guess.
And so the text elevate is kind of unnecessary over here, and same goes for Honda, by the way, which we removed already. We removed Honda and only kept elevate, which looks fine enough, but obviously we could go with something else. Like for example, the very basic ones which I didn't think. It's funny how our mind works. For some reason I didn't even think about them, the ideas that I'm talking about right now. So we'll go to the text and work on it. I already have the raster, so I don't have to worry about messing it up at the moment. Let's go to the text tool, select the text. I think I added a new. I want to edit the existing text, not. What is happening? Are we looking at the raster? No, it is turned off. Okay. Yes, we are looking at the raster. Sorry. This happened last time as well. Let's close them. So this is what I wanted to do. For example, we could have wrote words like this, which would get a lot more views, but we didn't think about it at all when we were creating this thumbnail. For some reason our mind was like blocked or something. And now we can also work with the not paragraph, character style. We'll reduce the gap between the words a little bit to create a bigger text. We might change the font over here because we are wasting some of the space, as you can see. I think I need to change the font completely. And I do have a lot of new fonts, by the way. I downloaded a lot of fonts. Let's switch to the text tool, select all. So I want something bold and slightly longer. I know that Anton will work here, but let's look at the other options as well. Well, I have a lot of new fonts now that I've downloaded from the internet. I mean, I already had them. For some reason I didn't install them. Let's also mark some as favorites. By the way, make sure if you download the font to read the licenses, and if needed, buy the actual licenses. In my case, I'm doing the same thing. LTS test. If you sell the thumbnails and stuff, okay, you need to buy the license, commercial license. I like this font, but in this situation we are looking for something larger. Let's move the thumbnail first to the side over here so that we can easily look at the font we are using. I think this is the font that we were using already. The same thing, different version. After creating the thumbnail, basically I'll go back and read the license thing, and I'll only sell thumbnails if the license will allow me.
don't worry about that. At the moment I'm creating all this for free, so it is fine. And by the way, it's looking like that because we have changed the character. Okay, I should fix that first before we move on. Let's do it 0. It should be the default. Do we go down and come back? Sorry. I wanted to select the bar over here. It's too small. Looks good. And real truth is just one word. We can add some more variations like worth it and I know for sure that the Anton will fit, and I also want to look at some other fonts basically before we choose that. This would be a good font for gaming thumbnails. Let's quickly get through this because I don't want to waste your time. If we'll not find anything in our fast search over here, then we'll go to Anton. Anton is like very squeezed type of font, and that's why it fits like within the thumbnail. Even if you like write a word with a lot of characters or sentences, and even if you make them bigger, it still fits most of the time. And that's why I like to use that font a lot on thumbnails. This looks good. This also will look good in gaming thumbnails. These are also good. Need to look at them later on. Not sure about where I will use that, but I like that. Nexa, I don't think I have a license for the Nexa one. I don't remember buying it. I think it's the demo version of the font. Mickey Maven. Nice. By the way, we are not looking for cool looking font. We are looking for a font that will fit inside our area that we have chosen to write font, to write the text, and then also be large enough to be visible in a smaller screen like phone. I downloaded a lot of Hindi fonts because I will get a lot of Hindi clients. Although I already like Kalam a lot for Hindi, but I didn't have like variety, so I do have varieties now, as you can see. Just go to Google Fonts, Adobe Fonts and stuff like that, and you can find a lot of them. Hindi fonts are not useful in this case. Sorry about the microphone. I just hit it with my
and this is also good for games. I remember using this font, Kolikatif, somewhere. Just don't remember where. This would be good fit for Instagram design, for fashion stuff and things like that. Callisto Kalam. Females like that sort of style basically. Impact is also one of the font that we can use, as you can see. They are also like very squeezed type of font, and that's the reason we can like use a bigger font without like compromising the amount of character that we can fit within the given area. So impact or Anton is the only option that I can think of at the moment. Or you can choose one word as well. Okay, for sports car, I think this font will be useful. It looks like a racing type of font. It's Fancy bubblegum. See, these are the two fonts that are like very squeezed, Impact and Anton. I like them a lot. I think I'll go with Impact. It's fuller compared to Anton. I wanted a bigger font, which we got. Now we just need to control it. And now I feel like the texts are not visible enough, and that is the reason. Although it is like visible, I think it's probably because of the light that I'm using. I think when we created this particular thumbnail, we weren't using this light, key light that I'm using, because right now it's dark. Okay, although I'm okay with it, I'm looking at the other monitor as well and my tablet over here just to preview, and it looks fine. What I'll do, okay, I am kind of splitted with my decision over here. Although I like it, I also think like maybe we could add a outline to improve it. Enable it and see. Just a little bit to enhance the visibility. I don't like this thing when it's selected like that, but if we click outside, then we lose the selection and then need to select again. I don't like that. So 0.5 is like too thin. We'll go with 1 pixel, let's say. 1 pixel looks good enough, but we could do better. This is okay, and I think I should go with a little bit of gray tone or just reduce the transparency
a little bit to make it look better. Let's go with 2 or 3 pixels instead, and then we'll customize it from there. Let's go with 3. The reason I'm going with 3 is because I now have decided to reduce the opacity anyway, and it won't be harsh enough to like distract us, and it's a lot of outline. Let's try 5 pixel even. 5 pixel is too much, I think. And also yeah, 5 pixel is too much. I need to keep it up to 3. That's the max we could go, and let's go with transparency up to 30%. And we can, of course, we can also go with 100% transparency and see how it looks. But in my opinion, I think it is fine. Let's try the 100% opacity for a moment. I think it might be good, but it sticks a lot, to be honest. It doesn't look good, I think, in my opinion. And that is the reason we could go with some gray tone, maybe. Light and color. This becomes white, basically. This looks like a little bit of glowing, but the thing is, the sky is already like a little bit glowing kind of surface, and that is the reason it won't look good enough. Let's go with 50% transparency and see how it looks. A preview. Okay, it's not good enough, I think. 30 was good. Let's go with 30. So I'm of 2 minds at the moment, because I want the title to be a little bit visible, but also at the same time I also don't want to use the outline, because it looks cleaner this way without the outline. The outline makes it a little bit more visible, but let's check how 3D will look. Okay, it looks like brochure. I don't want to create that sort of design. Outline is much better compared to this. We could add glow or shadow a little bit more. Let's disable the outline and check if we could improve it with outer glow only, and then if not, then okay, I had the outer glow already activated somehow. I don't remember it at all. Okay, it was there. We should be able to customize it, and without being too obtrusive about it, let's go with the outline option. I think we could use the outline. By the way, तो YouTube में live है किसी के? Oh, this or this. 3 pixels is enough, I think, and we will move forward with it. I could disable it if needed, but I kind of also want it to be a little bit more visible. Although I don't think it is actually required. We can disable it without too much of a fuss, and I think it is fine enough anyway. I'm not so sure about it.
Let's keep it this way, I think. I like it more. Yes, it's not being highlighted a lot. It's not very contrasty, but it looks good. The other thing that we can do is change the font color to something else and see how it looks like. Maybe a golden or something like that. Yellow, maybe. Yellow kind of blends in with the grass and stuff. So, not sure about that. Let's try something else. How about the red of the car? It's too much red. I need something lighter. Actually glossy. Okay, I think I need to look up some color palettes and use the colors from there. I'll open one of the thumbnails that I've made. Sure. Let's use this one. I don't have palette at the moment. I just said it. I want to create a palette that I will keep for every other project from now on. It's kind of lime green, not really yellow, with yellowish tone. And if we use the yellow type of font, then maybe we will be able to create outline without looking bad enough. Okay, I think I'll go with this one. The white font was good, but I think yellow font is much better in this situation. I can change the shade a little bit. I do have color saved. Not here actually, I forgot. It's in my website. Sorry. I have downloaded some colors, but it wasn't for the thumbnail. It was for website. I think it's fine. I can try different shade of yellow as well. Slightly golden shade, maybe. I'm looking at the color options over here that I have. We could go with a little bit of golden color if needed. I think it's fine though. Text. Let's see this different shade of this yellow. Slightly darker. Because we have the light background, slightly darker would look better, I think. Yeah, I think so. Real truth is a word that will pique curiosity a little bit. The previous text that we were using was like redundant. We shouldn't have used that text anyway. And that was the biggest mistake that we were doing, and I decided to fix that before we send this thumbnail to the creator. And there are some more ideas that I have. This is just one. Let's look at them. I mean, I won't show you guys, but I'm looking at them so that. So we'll just create different variations of the text now to intrigue the viewers basically. One is done, real truth.
Now let's edit it again. Text tool, select. The next text would be harsh reality. We could also go with hard reality to use to fit it inside this box that we are trying to use in terms of text. But the perfect word would be harsh reality, not hard reality. But just to make it bigger and more visible, I am willing to compromise. Because if you use hard reality, we could go with a slightly bigger font. Hard reality is okay. Harsh reality would have been better, but I want the font to be bigger, and that's the reason I'm choosing to go with hard reality anyway, even though it's not maybe not the right word. Sorry, I get like confused a lot when I think a lot. Next word that I'm thinking is a mistake, question mark. This is even more powerful, I think. But now that I can think, although it will require a lot of work, we could even drag down the car a little bit lower to fit the text even more. But I don't think we can get any benefit from it because it's the width, not the height, that is stopping us at the moment. So yeah, a mistake is definitely a very catchy word that we can use. Disabled again, mistake. Okay. I do have some more words that I thought about using, I think. Okay. It is a copy. The truth. I think we created already. Real truth. Okay. The truth could be another example. I think real truth is more powerful than this one, but just to have some variations to test while doing the A/B test. Let's keep it anyway. Not quite centered yet. I think that's fine. Let's not waste too much time on it. The last one. Yeah, regret. Duplicate, disable. We could simply use one word over here, regret, or we could use 2 words, a mistake, a regret, and question mark.
Let's go with our regret and question mark first, and then we'll just use regret. A regret, yeah, because the font size would be different, and that's why I chose this one first. A regret, yeah. Let's duplicate this again. Stable. And just regret. Although it's creating ISO, that's because people may assume it's B, not R. So maybe not a good idea. But that was the same case with regret probably. Let's see. Yeah, I think people are smart enough, but it feels like that, to be honest. It is feels. It does feel like it says B, not R. The only way people would assume it R is if they like know the word. Otherwise, it looks like B. Ooh. But I think I'm okay with it. Okay, so now we have a lot of variations, even though we didn't do a lot, simply because of the text. So one with regret, one with a regret, one with the truth, one with a mistake, one with harsh reality, hard reality. We used this one instead of harsh reality because harsh reality is too big of a word for this thing. And then finally one more, real truth. And I don't think we did the develop thing for this thumbnail, but maybe we want to, I don't know. Let's save all the thumbnails. Control to 50. I just want to see how it will look if we do some sort of adjustments. I don't think we have done it like in the previous version of this thumbnail. Okay, a bit more exposure. Does look good. Although because of the light that I'm using right now, I may not be able to perceive it better. Yes. Okay, I think I should develop everything. 333.333. I'm remembering it to use it later for the other version of the thumbnails. Contrast is good in this case, but let's not go nuts for that. Yeah, I think it's fine. We will not increase the saturation. We may want to play with shadow and highlights a little bit. Maybe not with highlight. Sorry, shadow.
Okay. All right. I don't think this is doing much. Slightly changing it. I think I want my image to be a little bit darker. Just trying to verify my point. Yeah, darker looks better. Let's go at -5. -5, 5, 7. Looking at the value because we'll just copy the values. E. V for version. बस सेव करते जाना है ऐसे रेस्टर कर करके रखता हूँ बाहर। रियल ट्रूथ को यहाँ पर डिसेबल करेंगे, हार्श रियलिटी को इनेबल करेंगे और फिर करेंगे रास्टर, कंट्रोलर शिफ्ट ई, इसको करेंगे डेवलप और वैल्यू हमें याद है, सेम वैल्यू रिपीट कर देंगे। 0.3 ये क्या था, 5 था, हो गया, यस 5 था या 3 था। आई थिंक 3 था, ज़्यादा हो रहा है। One three three contrast. Let's go with 7%. Then shadow and highlight -5 and 5. Develop. Just name it P Art Reality. एक और वर्जन रेडी हो गया। नेक्स्ट आर्ट रियलिटी को ऑफ करते हैं और मिस्टेक को ऑन करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट ई। ऐसा यहाँ पे दिखाने लग ज़्यादा कुछ है नहीं क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ, पर आप समझ गए क्या कर रहा हूँ। ये टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंट वेरिएशंस ये भी टेस्ट करने के लिए। 3 मैंने फर्स्ट वैल्यू याद कर लिया। अच्छा टाइप कर सकते हैं फटाफट करने का ना। 7 -5 and 5. Develop V a mistake। यहाँ क्वेश्चन मार्क आई थिंक सपोर्टेड नहीं होगा, फाइल नेम में तो नहीं होगा। The truth control safety develop three
3 7 -5 5 develop be the truth एक और वर्जन हो गया रेडी regret Control Shift E develop अभी तो आप लोगों को भी याद हो गया कर क्या रहा हूँ क्योंकि सेम इमेज है हमने बस टेक्स्ट चेंज किया है तो सब में सारे सेटिंग्स सेम ही होंगे 3 अब मुझे बाद में टैबलेट में प्रॉपर्ली देखना पड़ेगा ये टैबलेट में या मतलब लाइट ऑफ करके अभी लाइट के सामने देख रहा हूँ तो ये सही लग रहा है बट ऐसा होता नहीं है हमेशा तो थोड़ा नॉर्मल लाइटिंग सिचुएशन में मुझे देखना पड़ेगा कैसा दिख रहा है उसके बाद ही सेंड कर पाऊंगा -5 अभी क्योंकि सामने लाइट है तो मेरा कलर परसेप्शन थोड़ा डिफरेंट होगा या कॉन्ट्रास्ट वगैरह थोड़ा डिफरेंट होगा हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ही हो और मुझे पता ही ना चल रहा हो तो इसलिए बाद में रीचेक करना पड़ेगा सारा वर्जन फिर से पर अब फिलहाल अभी इस सिचुएशन में ठीक लग रहा है पी और रिग्रेट एक और क्वेश्चन रेडी हो गया लास्ट वन जस्ट रिग्रेट Control Shift T develop start here now -5 5 7 सॉरी मैंने स्क्रीनशॉट दबा दिया स्क्रीन पर है तो 7 मतलब नंबर की बटन है नंबर लो बट मैंने उसको मैप कर रखा है स्क्रीन बटन से क्योंकि वो है नहीं मेरे कीबोर्ड में 0.3 develop B regret बस सारे वेरिएशंस हमारे रेडी हैं टेक्स्ट वेरिएशंस एटलीस्ट सेंड करने के लिए अब मुझे बस एक्सपोर्ट करने हैं हमारा ईमेल ऑलरेडी रेडी था हमने ईमेल रेडी कर लिया है सेंड करने के लिए और उसके बाद बस सेंड करना बाकी रह जाएगा बस थोड़ी देर के लिए चैटिंग सीन पे आता हूँ क्योंकि नहीं पता कब क्या दिखेगा फाइल मैनेजर में सेव करने वाला हूँ Control Shift Flow 1280 by 720 1 MB एक्सपोर्ट एक बार सेलेक्ट कर लूँगा उसके बाद फिर आप लोगों को भी दिखा पाऊँगा वाइट थंबनेल्स मैं इसके लिए एक सेपरेट फोल्डर बना देता हूँ टेक्स्ट वेरिएशंस भी हमें न्यू क्रिएट करना पड़ रहा है ऑन द एलिवेट बी regret क्या आप दिखा सकते हैं अब सारे वहीं सेव होंगे होपफुली regret Control Shift अरे यार सॉरी ऊपर 2 MB हो रहा है वो क्योंकि 1080p में था थंबनेल 1.1 MB तो वो बस चेंज कर लिया मैंने टाइम बचाने के लिए
और वर्जन में नंबरिंग भी दे सकते थे, बट मैं टेक्स्ट को दे रहा हूँ क्योंकि हमने सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज करा है। ट्रूथ, ट्रूथ, मिस्टेक, गाना बज रहा है बस मेरे घर पे। ठीक है, स्पूट और रियलिटी। मैंने सारे थंबनेल्स के लिए बाय द वे वो टाइटल भी सोच रखा है, तो जब ईमेल करूँगा तो वो टाइटल भी उसमें मेंशन रहेंगे। आई नॉट, ये मैंने पूरा बताया था आपको कैसे काम करता है एक चीज। तो ये वाला थंबनेल कंप्लीट है हमारा, भेजने के लिए रेडी है। नेक्स्ट, क्योंकि हम इसी प्रोजेक्ट में काम करने वाले हैं, मैं देखता हूँ कि और नेक्स्ट हमारा क्या था। तो बहुत सारे आइडियाज में काम कर रखे। स्ट्रैटेजी, ओके, फोल्डर ढूंढ रहा था मैं। ओके, नहीं, ये वाला मैं अपने काम कर लिया है। ओके, कीबोर्ड वाला है इसमें। इसके लिए भी ना मैं कुछ कर रहा था कल नहीं, परसों स्टार्ट करी थी एक्चुअली, 2 दिन लग गया उसमें भी। तो मैं एक एआई ट्रेन कर रहा था अगेन, वो भी थंबनेल के लिए ही था जैसे मैंने बताया। पहले टेक्स्ट वाला फटाफट हो जाता है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इमेज वाला बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे मैं वैसे कोशिश कर रहा था कि खुद के क्लोन्स बना पाऊँ बिना फोटोज लिए ताकि डिफरेंट डिफरेंट थंबनेल्स बना पाए। तो वो कीबोर्ड वाला थंबनेल याद है, अगर आपने देखा है मतलब सारे स्ट्रीम्स दिन आपको याद होगा। तो वहाँ पे मैं चाहता था कि मेरा पिक्चर ऐसा हो जिसमें मैंने कीबोर्ड को मतलब बेसिकली फ्रंट में इस तरह से पकड़ा हुआ है दिखाते हुए, जो कि है नहीं मेरे पास। तो मैं सोच रहा था ये ऐसे क्रिएट करते हैं वो, और हमने फिर जेमिनी ट्राई किया था, जेमिनी ठीक से कर नहीं पाया। तो एक्चुअली कर सकते हैं एक्चुअली उसी से, अगर बार बार ट्राई करते रहे तो। बट मैं चाहता था कि कुछ एक सिंपलर मुझे मिल जाए जहाँ पे मैं खुद कंट्रोल कर पाऊँ। तो उसके लिए भी एक इमेज मॉडल भी ट्रेन करने की कोशिश कर रहा था। फ्लक्स जेन यूज़ कर रहा था मैं, फ्लक्स जिम ट्रेन करने के लिए। बट मेरे पीसी में बहुत स्लो हो रही थी, फिर तो मैंने बंद कर दिया फिर। तो या तो हम ऑनलाइन ट्रेन कर लेंगे, ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी अलाउड है, या आप जीपीयू रेंट कर सकते हो, तो रेंट करके भी ट्रेन कर सकते हैं, तो वो कर सकता हूँ। बट फिलहाल कितना टाइम हुआ पता नहीं, और कंटिन्यू करना है या नहीं पता। 1 आवर तो हो गया वैसा, जो कि मेरा टारगेट रहता है।
तो यहाँ पे कीबोर्ड थंबनेल है जो कि हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं। एक्चुअली ना मेरे पास है, पता है, मैं बस ढूंढ नहीं पा रहा अभी क्योंकि बहुत सारे लिस्ट हैं। मुझे पता है कि एक डॉक्यूमेंट में मतलब भरा पड़ा है आइडियाज, बस कौन सा डॉक्यूमेंट है याद नहीं है। इस बाय द वे जेमिनी में यूज नहीं करने के लिए ये बोल इसलिए बोल रहा था, दिखा था देख रहे हो। तो ये मतलब एक्सप्रेशंस चेंज तो करता है पर ऑलमोस्ट अनरियलिस्टिक हो जाता है, फिर मतलब रियलिस्टिक नहीं लगता। तो ये रीजन है कि जेमिनी पे कंप्लीटली रिलाई नहीं कर सकते, मतलब रियल इंसान लगता नहीं है। पर मैं जो खुद से ट्रेन करूंगा एआई, वो ऑब्वियसली ज़्यादा ट्रेन रहेगी। ये तो एक ही इमेज लेके उसी से क्रिएट कर रहा था जेमिनी। अगर मैं मतलब खुद से बिल्ड करूं तो मैं बहुत सारे इमेजेस में ट्रेन कर सकता हूँ एआई को, तो वो ज़्यादा रियलिस्टिक पिक्चर्स जनरेट कर पाएगा। ओके, मुझे नहीं मिल रही एक्चुअली। आई थिंक हमें थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे पिवट करना पड़ेगा स्ट्रिंग का, अगर कंटिन्यू करना है तो, नहीं तो एंड कर सकते हैं। वेट, मैं ये क्लोज करता हूँ एंड देखता हूँ कि हमें कुछ और थंबनेल पे काम करना है क्या। मेरा खुद का थंबनेल डेफिनेटली होगा बहुत सारा, उस पर काम करना हो। वो 5 गीग वाला इमेज में काम करना है एक तो। ये अपना जेमिनी का विंडो यहाँ पे मिक्स कर देता हूँ, उसको मैंने अलग से खोल रखा था आइडियाज़ और ये इमेजेस के लिए जो दिखाने थे। मैं क्विकली देख लेता हूँ, आई थिंक मुझे डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करना है बट याद नहीं आ रहा अभी फिलहाल। अब बात है ये योर थंबनेल वाला भी हम इम्प्रूव कर सकते हैं एक्चुअली, पता है कुछ खास नहीं, मैं दिखाता हूँ मैं क्या करने वाला हूँ, मिलता है तो। प्रोजेक्ट फाइल आई थिंक होगी इसकी भी, एक्चुअली नहीं है क्योंकि हमने शायद कैनवा में, नहीं कैनवा में बनाई थी इजीली। हाँ कैनवा में बनाई थी शायद, पता नहीं हमने ज़्यादा मेहनत करी इसमें। कैनवा में देख रहा हूँ आप, ओके कैनवा में भी नहीं है, पता नहीं हमने कहाँ पे बनाया था ये, शायद बना के फिर डिलीट ही कर दी होगी शायद प्रोजेक्ट, शायद सेव नहीं करी। बेसिकली हम वो ग्लो इफेक्ट थोड़ा सा डाल सकते हैं योर थंबनेल जो टेक्स्ट है उसमें। अच्छा हाँ याद आया, मैं वही सोच रहा था कि मुझे काम करना था लेकिन याद नहीं आ रहा था कि किस में करना था, याद आ गया। एक एफिनिटी प्रोजेक्ट ही है ये वाली, तो इस पर हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है पर बाद में आइडिया आया इम्प्रूवमेंट्स का थोड़ा बहुत। और इसमें भी ध्यान दोगे तो मल्टीपल रास्टर्स हैं क्योंकि ये जो टेक्स्ट है वो डिफरेंट डिफरेंट यूज़ करा हुआ है मैंने। रैंक 1 जो टेक्स्ट दिख रहा है आपको, तो ना मैं 3D सा लुक देना चाहता था,
वो है। ऑब्वियसली ये पहली बार कर रहा हूँ तो मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है कैसे करना है नहीं करना है। सिंपली ये 3D इफेक्ट देने से क्या होता है देखते हैं पहले। ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है ऐसा। हाँ क्योंकि ये तो हमने बैकग्राउंड रिमूव किया है ना तो पता नहीं चल रहा। तो ये एरियाज में इफेक्ट हो रहा है एक्चुअली। जो एरिया इससे अफेक्ट हो रहा है वो हमें दिख नहीं रहा क्योंकि वो हमने बैकग्राउंड रिमूव करा हुआ है। पर हाँ 3D एलिमेंट, और उस दिन जब हम क्रिएट कर रहे थे थंबनेल तो हम कम्प्लीटली भूल गए कि हमें ये जो सर्च है उसको हटा के वहाँ गूगल का लोगो डालना था। पर हम भूल ही गए उसको एकदम से। और यहाँ पे या तो डालना था ये छोटा सा जो एरिया है। पर उस दिन मतलब हमारे दिमाग से ये बात निकल ही गया था। लोगो डाउनलोड कर लेता हूँ क्विकली। या पता नहीं है शायद मेरे पास, देख लेता हूँ। होगी भी तो शायद पुरानी वाली होगी। नहीं है। गूगल का लोगो ढूंढ लेता हूँ क्विकली। मुझे आइकन्स मिल रहे हैं बहुत। आइकन नहीं चाहिए अभी मैं। वर्ड मार्क चाहिए, वर्ड मार्क। ये एसवीजी है, मैंने जस्ट कॉपी कर लिया, डाउनलोड भी नहीं करना पड़ा। कर भी लेता हूँ पर ऐसे। एसवीजी का ये बेनिफिट डेफिनेटली है कि आप सिंपली कॉपी कर सकते हो। तो इसको प्रोमिनेंट होने की ज़रूरत नहीं है, बट मतलब छोटा सा भी रहेगा तो लोग समझ जाएंगे क्योंकि लोगों को आदत है। और क्योंकि ये एसवीजी है मैं एक एक चीज़ एडिट कर सकता हूँ, एक एक फॉन्ट। आई लाइक एसवीजी। फिलहाल मैं सबको एक साथ एडिट करना चाहता हूँ। यार क्यों बंद हो जाता है। मैं ना ये सोच रहा हूँ कि होगा। तो क्या हो गया, दिखना क्यों बंद हो गया। पीएनजी ही चाहिए होगा क्या। ओ नहीं, एक्चुअली हम रास्टर देख रहे थे, ये वाला। सॉरी, गलती मेरे से बार बार होती है, इसको याद रखना पड़ेगा।
ये छोटा सा चीज हम उस दिन अगर करते तो बेटर होती है, थोड़ा सा बेटर दिखता, पर हमने किया नहीं उस दिन। मतलब एक्चुअली प्लान में था, बट स्ट्रीम पे फिर चैट होने लगा, चैट पे फिर मैं बात करते करते भूल ही गया। फिर छोटा सा चीज़ है, बट लोगों को थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर लगेगा, सर्च इंजन टाइप लगेगा फिर से। अच्छा तो लग ही रहा है, पर और ज़्यादा इजीली लगेगा। और मैं ना 3D इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कैसे करना है। यहाँ पे ग्लो हमने वाइट डाला हुआ है, पहले मैं सोच रहा था ब्लैक डालूं, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा था। पर देखो अभी सिर्फ ये लोगों की वजह से थोड़ा सा बेटर लग रहा है। देखो पहले ये था, जो कि कुछ खास चेंज नहीं है, पर सिर्फ उसको ऐड करने से फेमिलियरिटी ऐड हो जाती है, तो वो था, इस वजह से मैं करना चाहता था। और हमने मेन थंबनेल में कोई इफेक्ट नहीं डाला है, जो कि मैं नॉर्मली बेसिकली जो भी थंबनेल का बैकग्राउंड होता है उससे मैच का नहीं यूज़ करता हूँ, जो भी ये कटआउट रहता है उसको। बट हमने उस दिन कुछ किया नहीं था। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ एक आउटर शैडो यूज़ करा जाए, थोड़ा सा डायरेक्शन मैं इस साइड चाहता हूँ। पहले थोड़ा बढ़ा लेते हैं। 100% ओपेसिटी से पहले ट्राई कर लेते हैं, बना लेते हैं। डेंसिटी 0 ही रखेंगे, से 50। हालांकि ये भी नॉर्मली लग रहा है, पर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा ऑफ सेट करके हम सिर्फ लेफ्ट साइड में करूँगा। तो हम अभी बेसिक चीज़ें ही कर रहे हैं, पर ये बेसिक चीज़ें भी एक्चुअली थंबनेल को बहुत इंप्रूव करती है। अरे यार नंबर सही करना पड़ेगा। तीन नुकसान जो इंग्लिश न बोलने पे आप उठा रहे हैं। इंग्लिश नहीं आती उसकी जॉब लगती। नंबर 2, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसकी कई शादी। नंबर 3, जिसको इंग्लिश नहीं आती उसकी कोई इज्जत नहीं होती। अगर आपको ऐसा ही इंसान बनना है तो मत सीखिए इंग्लिश, लेकिन अगर अपनी जिंदगी बदलनी है तो आप चलो कुछ तो सीख ही जाए। और ऐसी इंग्लिश बोलना आप इंग्लिश सीखो ऐप से सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखो ऐप पे स्पोकन इंग्लिश का एक पूरा शो आता है, जहाँ इंग्लिश सीखो के एक्सपर्ट्स। ये क्या है, डायरेक्टली इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है? जैसे ये वीडियो हर दिन का मैं मतलब स्मूथली उसको मूव करना चाहता था। क्या है ये? मतलब हम क्या कुछ फिक्स्ड वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं और बाकी एंटर करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या? ऑफसेट की वजह से ये ठीक लग रहा है फॉर सम रीजन। मैं बस टेस्ट कर रहा हूँ। Let's say 5 pixel. थोड़ा सा बेसिकली वो हल्का सा बैकग्राउंड वाला वाइब देने के लिए ये मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ। एक्चुअली आउटर नहीं, इनर ग्लो होता है वो, मैं भूल गया था, सॉरी। तो ये बेसिकली इनसाइड देख रहे हो,
शैडो लेके आता है थोड़ा बहुत। हालांकि इसको करने का बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीका भी है, बट फिलहाल मैं उतना मेहनत नहीं करता हूँ। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ये पर्पलिश टोन ले सकते हैं, ये वाला टोन ले सकते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि हम थोड़ा लाइट पहले ट्राई करते हैं कैसे दिखता है। ऑब्वियसली रिड्यूस करेंगे, और डार्क वाला तो आई थिंक पता ही नहीं चलेगा, पर हाँ काम करता है। अच्छा, आई थिंक यही ठीक लग रहा है, बस हल्का सा इफेक्ट देने के लिए, और कुछ नहीं है। चैट आ रही है, मैं देख लेता हूँ एक बार। नोटिफिकेशन तो आई, फिर मैंने देखा नहीं। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। कैसा चल रहा है? So the improvements that we have made so far is enabling this effect over here on this thumbnail. Toggle layer effect. क्या उसको हम ऑन ऑफ करके नहीं देख सकते? तो हाँ वही करा, और ये गूगल का लोगो डाल दिया थोड़ा सा, और मैं एक्चुअली 3D इफेक्ट देना चाहता हूँ, बट वो मेरे से हो नहीं रहा अभी फिलहाल। चलो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि दोनों को कंबाइन करके दे सकते हैं क्या। ओके हाँ दे सकते हैं, पर मैं जैसा चाह रहा हूँ ऐसा एग्जैक्टली क्रिएट करना नहीं आ रहा मुझे। So 10. Seven. 5. 5 enough है। ये टूल मैंने ज़्यादा यूज़ किया नहीं है 3D वाला, बट अगर मैं खुद से क्रिएट कर पाता तो और भी अच्छा होता। ये तो मतलब इनबिल्ट फीचर है। फोटो बीच में होने से क्रिएट करता। हाँ डिफ्यूज स्पेक्युलर, बहुत कुछ है यहाँ पे, ये देखना पड़ेगा सारे सेटिंग्स क्या करता है। अभी करेंगे तो बस हम खेल रहे होंगे। आफ्टर शेडो, मुझे अभी स्ट्रीम एंड करने का टाइम हो रहा है, तो ज़्यादा नहीं करते। ये देखते हैं क्या करता है। अच्छा थर्टी रखते हैं, एक बार इंटेंसिटी बढ़ा के ही पहले एडजस्ट कर लेते हैं सब, उसके बाद घटा देंगे। हमारा वहाँ पे जो भी हमने इसमें किया है वही करते हैं। 0 डिग्री 150 30। तो 0 डिग्री कर लेते हैं। 150 30 क्या था वो? ट्रांसपेरेंसी 100 था। यहाँ पे वैसा अच्छा नहीं लगेगा, आई थिंक ये था 30। नहीं यार, देखना पड़ेगा एक बार। 150 30 0। अच्छा 130 50। क्या कर रहा हूँ मैं? एंड 0। यहाँ पे ऑब्वियसली ये सही नहीं लग रहा, कुछ और करेंगे।
डेंसिटी 0 ही रखते हैं। फोटोशॉप है क्या? नहीं, एफिनिटी फोटो, एफिनिटी। opacity कम करेंगे, give the feel of shadow in light। एंगल थोड़ा चेंज करेंगे और नीचे वाला लेंगे। हाँ, ये फिक्स्ड पॉइंट है। अगर मुझे मतलब स्मूथली करना है तो नंबर ही एंटर करना पड़ेगा यहाँ पे। आई थिंक ठीक लग रहा है ऑलरेडी। देख लेते हैं एक बार प्रीव्यू। आई थिंक बेटर है। ये जब मैं भी नहीं सच बताऊँ कैसे समझ रहे हो, कर करके जैसे तैसे एक्सपेरिमेंट कर करके पता चल रहा है। पर देखो मतलब हमने 2-3 चीज़ ही करा बट थंबनेल काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। यही था, बस यही शेयर करना था और इसीलिए मैंने ये थंबनेल दोबारा ओपन करी आज को। हालांकि ए बी टेस्ट अभी ऑलरेडी रन हो रही है तो ये न्यू वाला मैंने रन नहीं कर सकता। देखते हैं उसमें जो भी जीतेगा फिर उसी को दोबारा रन कर दूंगा। और एक्चुअली मैं ये सब भी एडिट करता था थोड़ा बहुत, अभी नहीं कर रहा हूँ, नहीं करा है मतलब। पर यहाँ पे क्या यूज़ करता था वो याद नहीं आ रहा मुझे। नॉर्मली एक्सपोजर यही सब करता था और ये जो बैकग्राउंड कलर है उन्हीं का इफेक्ट को थोड़ा बहुत कॉपी करने की कोशिश करता था। आई थिंक HSL कलर यूज़ करके। कर्व्स, थ्रेशोल्ड, एक्सपोजर, पोस्टराइज, याद नहीं है मुझे, कुछ तो करता था मैं। तो नॉर्मली यही सब करके ये सिर्फ इमेज को एडिट कर रहा है और बेसिकली हम अपने ओवरऑल जो भी इमेज होती थी उससे हम सिमिलर सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करते थे। और अभी ये पूरा इमेज में अप्लाई हुआ है पर ये करके आप सिर्फ इस इमेज में अप्लाई कर सकते हो। पर मैं कलर ही चेंज करता था जहाँ तक मुझे याद है। मतलब पूरा इमेज का कलर थोड़ा मैच करता था बाकी कलर से। कैसे करता था याद नहीं आ रहा। Add selective color, gradient map, maybe gradient map। एक बार हमने करा है सीखते वक्त, मुझे याद नहीं है पर कैसे किया था, क्या किया था। एडिटिंग आती है मुझे कैपकट में, पूरी वीडियो एडिटिंग आती है पर ये फ़ोटो एडिटिंग नहीं आती। अच्छा, मैं भी सीख ही रहा हूँ। ये अभी आई थिंक 10वां 11वां दिन हो रहा है और ये न्यू सॉफ्टवेयर है। अभी सॉफ्टवेयर भी न्यू है तो ज़्यादा कुछ नहीं पता मुझे भी। हो गया पर ये रेडी है, इतना ही करते हैं क्योंकि मुझे ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमें एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। नॉर्मली जब हम गेमिंग थंबनेल या कुछ थंबनेल बनाते हैं तो हम बैकग्राउंड से मैच करने की कोशिश करते हैं, पोर्ट्रेट को भी। बट यहाँ पे तो ऑलरेडी मतलब काफ़ी हद तक मैच हो रहा है तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये ऑलरेडी बहुत बेटर लग रही है, दिखाता हूँ मैं। बहुत बेसिक सी चीज़ें करी बट उसी से इम्प्रूव हो गई थंबनेल। तो ये आइडिया एक्चुअली, ये गूगल आइकन वाला आइडिया तो उसी दिन का था बट हमने किया ही नहीं क्योंकि बात करने में बिजी हो गया, चैट आना शुरू हो गया था। तो पर बाकी चीज़ वैसे बाद में आया था आइडिया। वैसे ये था इससे पहले। और अभी यहाँ पे हमने वो डेवलप वाला किया नहीं है तो इसलिए थोड़ा कॉन्ट्रास्ट वगैरह इग्नोर मारो। बस यहाँ पे थोड़ा 3D लुक डाल दिया है, यहाँ पे ये डाल दिया और यहाँ पे लाइट स्पिल है थोड़ा सा इमेज में, ये ब्लू लाइट दिख रहा है। तो ऐसा बेसिक चीज़ें, और यहाँ पे शैडो ऐड कर दी और बेसिक सी चीज़ें, लेकिन थंबनेल काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। छोटे छोटे चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता है।
अभी इसको अगर रास्टर करें हम तो लेयर तक आना है। टोटल शिफ्ट की डेवलप, थोड़ा बहुत एक्सपोजर ऐड करेंगे। इस केस में आई थिंक हमें ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी वाइट टाइप की इमेज है, तो ये बढ़ा सकते हैं। ज़्यादा डार्क हो गया, 5.3 तक जाते हैं। ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं। आई थिंक एक्सपोजर यहाँ पे हमें बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है वैसे। कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं। कॉन्ट्रास्ट लेट्स गो विथ 7, मेरा फेवरेट नंबर है इस केस में, हमेशा काम करती है। 5 भी वैसे बढ़िया लग रही है। हाँ, लास्ट शैडो और हाईलाइट में थोड़ा सा काम करते हैं। भी हाईलाइट थोड़ा सा 3। एक्सपोजर 0 ठीक है। हाँ आई थिंक ये ठीक ठाक दिख रहा है। तो बस ये वेरिएशन एक न्यू क्रिएट कर दी मैंने, जो कि आई थिंक बेटर वर्जन है। अब देखते हैं वो एबी टेस्ट में जो भी जीतेगा उसको रिप्लेस कर दूंगा इससे। अभी फ़िलहाल एबी टेस्ट रन हो रही है, तो मैं अभी कुछ नहीं करूँगा। सेव कर देता हूँ इसको। हो गया, आज के लिए इतना ही रखता हूँ। ऐसे भी बहुत काम बाकी है, तो स्ट्रीम तो करता रहूँगा बट अभी के लिए बस इतना ही रखूँगा। Thank you so much for joining, everyone. Make sure to subscribe if you're watching this on YouTube. Make sure to follow if you're watching this on Twitch. Thank you so much for watching. It means a lot, and I hope to see you again. I hope you have a lovely time ahead. Bye for now.